Namaskar dosto, good evening friends. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly and familiar endocrinologist. And you're watching Dr. KK's Med Talks, Mondays with Dr. Sanjay Kalra. आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 779th 779वां एपिसोड है. Let's have the headlines for today. हिंदी में कहावत है, there's a saying in Hindi, थप्पड़ कोई मार दे या चपेड़ मार दे तो उसका निशान रहता है. So even after you get slapped by someone or you slap someone, that after effect lingers. And that's what has happened with COVID-19. 2/3 of the first wave COVID patients had long-term symptoms. तो 2/3 लोगों को जिनको कोविड हुआ 3 साल पहले, उनके सिम्टम्स 1 साल तक बरकरार रहे. The WHO has suggested kangaroo mother care. इसके बारे में भी जानेंगे किसी और केके मेड टॉक्स के एपिसोड में. मगर WHO ये कहता है कि जो लो बर्थ वेट बेबीज हैं, नवजात शिशु जिनका वजन बहुत कम हो, दे कैन बेनिफिट फ्रॉम कैंगरू मदर केयर, जिसमें माँ अपने बच्चे को कैंगरू की तरह अपने पेट के पास रखें. A new artificial intelligence device known as Delphi has been created. This is a technology to detect liver cancer. और हमारे बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं in spite of pollution, in spite of so many other things, but बीजिंग में, चाइना में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल बंद हो गए हैं because of the COVID scare. So that was the news for today. Let's go to our topic for today. Adverse drug reaction reporting. एक ही टाइटल में 4 चीजें, so we need to learn about all these 4 things first. आपने केके मेड टॉक्स में देखा होगा, we get the best people from across the world to speak with us. We learn from them, we share with them. कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स के टीचर्स होते हैं, मगर आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर्स के टीचर्स के टीचर. एंड लेट्स वेलकम आवर गेस्ट प्रोफेसर दिनेश कुमार बडियाल. वार्म वेलकम सर. Thank you so much, Dr. Sanjay. Welcome sir. Professor Dinesh is a professor of pharmacology at the prestigious Christian Medical College in Ludhiana. He has contributed significantly to the undergraduate medical curriculum in India. And when you see the list of degrees and fellowships that he has, तो ऐसे लगता है डॉक्टर साहब ने कुछ छोड़ा ही नहीं किसी और के लिए. Is that right, sir? It kept on happening because I think we needed at that time to add more things so that we can actually progress on these components. Like one is ADR. Yeah. Thank you. And one of the special things about Dr. Dinesh is that he teaches medical teachers. So before we move on to our topic, we'll ask him to talk to us about that. आज का जो मेडिकल करिकुलम है इंडिया का, उसकी मजबूती क्या है, उसकी बुनियाद कितनी मजबूत है. We'll ask him about that and we'll ask him what he is doing in North India to contribute to that. He has also been editor-in-chief of the National Journal of Pharmacology and Therapeutics, senior editor of the Indian Journal of Pharmacology. मेरी भी एक बार लेटर छपी थी उसमें, so I feel very proud. तो जिस जर्नल में एक बार मैंने चिट्ठी लिखी टू द एडिटर, वो थी सोशल फार्माकोलॉजी पे. एक ही बार लिखी, एक ही बार छपी. जो रिजेक्ट हुए वो तो मैं बताऊंगा नहीं किसी को केके मेड टॉक्स पे, वो भी लंबी लिस्ट है, बट उसके एडिटर डॉक्टर साहब हैं. वार्म वेलकम सर. Thank you sir. Sir, we have with us people logged in from across the country. We have doctors. Dr. Sanjeev Puri from Hoshiarpur, next door to you in Ludhiana. Dr. Vipin Bandula is a senior pediatrician. So is Dr. Pawar. We also have other people from across society. केदार जोशी जी ने लॉग इन किया हुआ है. एंड विपिन मंडूला जी पॉइंट आउट करते हैं दैट 14 to 21st इज न्यू बॉर्न केयर वीक एंड 17th of November इज वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे. सो थैंक्स सर फॉर रिमाइंडिंग अस. तो ये सब जानना चाहते हैं. टॉपिक हमने चुना एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग. इसकी परिभाषा क्या है? वन बाय वन कैन यू टेल अस व्हाट रिपोर्टिंग इज, व्हाट इज अ रिएक्शन फॉर ड्रग एंड व्हाट्स एडवर्स? So this topic which we have chosen, जो हम सोच रहे थे कि in a platform like that, जो सबको useful है, what should we use that? So we thought about reporting within the medical community. We have been trying to make awareness people. ये कल्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. People report ADRs. Because क्या हो रहा था कि पीछे 2011 के बाद कोई ड्रग बैन नहीं हुई अभी तक. ये ना हम थ्योरेटिकली सोचते होते थे ऐसी सिचुएशन विल कम, बट दिस हैज कम नाउ. सो सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू बैन ए ड्रग these days. People ask why.
even the manufacturer will ask you why you're banning. You need to provide some evidence. So that evidence, how it will come? Only when we report. We have a database. Then we can say. Otherwise, if even you say the normal drugs which we take, like amoxicillin, a lot of people know when you take antimicrobial, you get diarrhea. अभी आप इसको सर्च करके देखना इंडियन पॉपुलेशन में डायरिया होता कि नहीं, यू विल बी सरप्राइज्ड कि इंडियन पॉपुलेशन इज वेरी रेजिस्टेंट बिकॉज हम रिपोर्ट नहीं करते, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो सबको पता है, व्हाई टू रिपोर्ट. See, many of these areas we read from drugs, that a list is there or the package insert which is there. And we assume that's all, everything has been done. But when the drug comes into market, after phase 3 of human trials, what we call, it is tested maximum on 5,000 individuals. Now think about single drug. ADRs or adverse drug reactions are inherent property of a drug. कोई तो उसी के एक्शन एक्सटेंड हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टेकिंग ए ड्रग टू डिक्रीज योर बीपी, अगर बीपी ज़्यादा डिक्रीज हो गया तो हाइपोटेंशन हो गया, तो उसको भी हम लेबल करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन. तो दीज आर पॉसिबल, all ADRs are there, is possible. There is no drug which will say their ADR is not there. So accordingly, what happens? We need to report that. Otherwise, we are reaching a situation where nobody is finding. We don't have this culture. Some countries, the reporting rate is 50 to 80%. In India, it is now around 3 to 4%, which is low looking at number of healthcare professionals which we have. And remember, we are the fourth largest manufacturer of pharmaceutical products. So we have many options, we have many ideas happening, बट वो कल्चर नहीं बन रहा. मे बी अवेयरनेस ये भी है कि कोई लीगल इशू ना हो, मैं रिपोर्ट करूंगा तो क्या होएगा, दोज थिंग्स आर देयर. सो इवन नाउ इन इंडिया, व्हाई वी आर टॉकिंग टुडे दिस, दैट एज ए पेशेंट यू कैन रिपोर्ट. डॉक्टर तो पहले भी करते थे, okay, a few years back. Now in India, patients can, consumers. So all of you who are there, when you get an ADR, simply app पे भी report कर सकते हो आप. So those things are also available to the nearest center which is there. तो आपको सर बहुत सारे लोग ग्रीट कर रहे हैं, सन्नी ग्रोवर जी एंड ललित कथुरिया साहब, जो लीडिंग फार्मास्यूटिकल बिजनेसमैन है हरियाणा के. ये कह रहे हैं दैट्स अ ग्रेट टॉपिक एंड वी वर ऑनेस्टली नॉट अवेयर ऑफ दिस, इवन आई वाज नॉट अवेयर दैट एनीबडी कैन रिपोर्ट. तो जो सुन रहा हूँ डॉक्टर साहब से, और हमारे साथ विनी जोगलेकर जी हैं, मैडम इज अ न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम बैंगलोर, स्वप्ना जैन जी इज फ्रॉम वेल्लोर, अ पेशेंट एडवोकेट. तो हम जो सुन रहे हैं, और मेरे लिए भी ये न्यूज टू मी है एंड इट्स म्यूजिक टू माय ईयर्स, के हमारा हक भी बनता है, हमारा राइट है टू गेट सेफ ड्रग्स. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एंश्योर दैट अदर पीपल गेट सेफ ड्रग्स. हम अपने हक को, अपने राइट को और अपनी जिम्मेवारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा करेंगे अगर हम उन ड्रग्स को प्रॉपरली यूज करें. अब अगर किसी ड्रग का एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी हो सकता है, बट दैट डजंट मीन ऑल द ड्रग्स आर बैड. अब पानी पीने से भी पेट में दर्द होता है. आई मीन इफ यू आर गोइंग टू ड्रिंक 3 liters ऑफ वाटर एट वन गो, गल्पिंग इट, यू विल गेट इन ट्रबल. नमक और चीनी से भी दिक्कत आती है, मिर्च से भी दिक्कत आती है. दैट डजंट मीन यू स्टॉप यूजिंग पेपर इन योर और स्पाइसेस इन योर कुकिंग. तो ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, इफ वी लर्न मोर अबाउट इट, देन वी कैन नो व्हाट टू रिपोर्ट, व्हेन टू रिपोर्ट एंड whom टू रिपोर्ट टू. तो सर हिस्ट्री बताएंगे. आपने कहा कि जब भी ड्रग मार्केट में आता है, इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड इन लॉट्स ऑफ एनिमल्स एंड मे बी 5,000 ह्यूमन बीइंग्स रफली. But then when it is going to be used, it might be used in crores of people. So we should keep on checking for all these reactions. कोई एग्जाम्पल बताएंगे फ्रॉम हिस्ट्री जब पहले हमने रिपोर्टिंग नहीं की और उसके बाद जब मे बी जर्मनी में या कहीं पे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रिपोर्ट किए गए, तब वो ड्रग बैन किया गया एंड दैट एक्चुअली हेल्प्ड ह्यूमन काइंड. Okay, so I was just looking at that. I can show you that component because that is unfortunately important. If you give me like maybe 8 to 10 minutes, Sure, sir. this Most component, and then we go through that, and then we will come back and take more questions. Yes, So certainly. when we talk about area reporting, you're very right. What is this concept? We need to know. And what are the concerns and consequences if we do not report? So that is very important. See, look at the ADR scenario, that reporting scenario in different countries. Presently, even you look at these ADRs are the fourth and sixth leading cause of death, morbidity and mortality. Most of the countries. There are many studies. In India also there are studies. So they are also putting a lot of burden on the health economics in that way. So
If you look at the drug withdrawals, okay, which are happening throughout, some restriction withdrawals, lot many history is available with full of that. Now I'm coming to this one. If somebody knows that, maybe everyone can search. I would like to have some answers. Just search this person, Alison Lapper, British artist, born in 1965. Her work notions of physical normality and beauty, autobiography was published. She won many awards. Just try to search and see what comes at the top. This is very, very important for all of us to know that. Any answers are there, Dr. Talwar? Doctor, can we have to access to any answers we are getting? We'll wait for a minute, and in the meantime, a salam for you, Daksa, from across the border, from Dr. Noor Aga Danish from Kabul. Right. Ratnesh Jain ji, Vineet Bhatia ji, all thanking you. Also, Anamika No Madam, and Lakshmi Chandra ji. My Anita namaskar to Datyani all of ji. them. Yeah. And the question is difficult. Sir, आप ही जवाब दे दो, please. So, sir, this most of you might be remembering this. I was saying, unfortunately, we wait for a disaster in medical science, and then a new regulation comes. So, this is what happened. She is suffering from thalidomide disaster. This is a drug, for example, which in 90s, around 60s, the condition is known as phocomelia, when arms and legs are directly attached to the trunk. This is a congenital teratogenic effect. It means only that generation is affected. So the next their kids and everything is normal. So this drug, when it was launched, it became very popular as a morning sickness, जो nausea vomiting pregnancy के लिए यूरोप में. They started using it. It was not allowed at that time in the US. Only few free sample came. So approximately 20,000 babies were born after a year with this condition. Nobody was knowing why this is happening. They didn't thought about the drug. Then somebody else, other clinician, thought about a causation, and they found this was the responsible. Then at that time the law came that you have to test the drugs in one rodent. Rodent में होते हैं rat and mice, और एक नॉन rodent भी इंक्लूड करना है, क्योंकि तब तक नॉन rodent इंक्लूड नहीं होते थे. But when they gave this drug to the rabbits, it produced the same anomaly. This is ADR. That's why this drug was withdrawn. Now it has been introduced with a limited supply with the restrictions on the use. So this is one story which tells us, okay, these things happen, and we need to take some lessons from that. So this was the paper at that time published with the Phocomelia reports. And remember, we have a large strength, and you can remember so many drugs which you are using, so many ADRs are happening, but we are not reporting that. There are various methods of reporting. Okay, sometimes intensive, you have a active reporting. In India, we have a passive voluntary reporting. It is not mandatory, you can report or not, it's a voluntary totally. Other methods are also there, different countries. And 22 drug withdrawals have been primarily based on spontaneous reports. You can see that clinical trials which are very highly regulated, only 2 based on the data emerging from trials. So this is the importance of spontaneous reporting. And I was going to ask this, but I think we discussed that in India now, even patients can report, pharmacists can report, physician can report, physiotherapists cannot report. So patients can report. So coming into that component, there are various players into that. So see, this is a now international movement for many years now. In India, we have this program running up known as Pharmacovigilance Program of India. So we have a WHO center, then under that there's a data monitoring center, Uppsala. Then we have a national center, pharmaceutical industry, hospital, academia, health professional. Clinicians are reporting around 64%. Patients, other partners. 2 terms which we use, ADR and ADE. R means reaction. It simply says that you have proven there is an association with the drug. For example, somebody takes a drug, he feels drowsy, and he is crossing the road and there's a road traffic accident. We will first label it as adverse drug event till causation is proved. There are certain scales like WHO and Naranjo we apply, and we come to know which can be the possible cause. If it is related to drug, then it converts to ADR. This is important because in the clinical trials, compensation is given for ADR and not for ADE. So during COVID, many drugs were used, new drugs, and suddenly we got a lot of reports of black fungus with a particular drug. What happens? Many countries are now part of this program.
Suppose in India one ADR goes, from other country one ADR, new drug is being used, or some drug which was lying in the backyard has been used now frequently because of the COVID at that time. So suddenly there will be 10 reports from 10 different countries. Although from a country it is only one, you will be suspicious. One, it is from the 10 countries, suddenly a signal is generated at the international level. And they report it back, try that please follow those patients more report and try to strengthen the signal or it will weaken down. So that's something which happens. We need to be worried. And this is I was worried. I was talking about vigilance. Vigilance is not that you're policing around. It is only not that you are not only reporting ADR, but you are also managing that. And you are making strategies for future prevention of the morbidity and mortality with these ADRs. So that needs to be done. So this is the program I was talking about, Adverse Drug Reaction Monitoring Centers in different places. Pharmacovigilance Program of India is the program. Many medical colleges are already part of that. If you have a hospital or institution, you want to become part of that, you can simply fill up their intent for that on the website of Pharmacovigilance Program of India, the CDSCO, and then they will approach you and accordingly you can start collecting. So there are monitoring centers, then medical colleges, hospital, they are part of that. This is a form, which is a one-page single form. On average, it takes around 5 minutes to fill it. You can submit to the nearest center, the various forms, okay? And see, confidentiality. Your who is reporting this information is not provided. It's confidential to anyone. And this is what I was talking about. Consumer forms, patient forms. They are available in 8 vernacular languages. You can use that. To make it easier, ADR PVPI app. Just type ADR PVPI and both the platforms you get this app. You can email also. You can use mobile numbers also. So something like that, you can use that. And after that, what happens? All the reports are collected, and then we are generating package insert changes. The small leaflet you see अंदर एक होता है every drug, उसमें जो changes आ रही है ना, that are now India specific. Earlier we were using a lot of other literature people were using. Now it's very, very India specific. Based on that, those things are calculated. For example, let's take example of proton pump inhibitors. We keep on taking for SDT on and off, but remember long-term long-term use leads to fractures, okay, because it has some issues with the absorption of the calcium. So that becomes an ADR. But till if we don't generate, make people aware of that, this keeps on happening. So there's a definite association with the fractures. So in this way, now suppose you are sitting in your laptop as a not only a medical person but non-medical. VGXS is one platform where you don't have to log in. This is free. You want to know about ADR of any drug, type VGXS, browser will open, type the name of the drug, you will get all the patterns and everything, even system wise. So that's quite useful. So this is how we are actually moving around, and a lot of people are contributing to those components. So Dr. Sanjay, we can actually continue discussion. Thank you, sir. It was a great introduction, and I just like to thank Dr. Vipin Mandula and Dr. Sanjeev Puri, who had answered Focomilia, short arm and legs by the time. Great. Dr. Noor Danish from Kabul asks, how can we avoid an adverse drug reaction? But first, let's thank Dr. Dinesh for telling us the difference between an adverse drug event and an adverse drug reaction. And he has talked to us about how we can report it in India. Another good thing that Dr. Dinesh has taught us is, अगर हम report करना चाहें तो भी हम किस जरिए के through जाएं, how can we report? और अगर हम सीखना चाहें, we want to learn from other people's reports, तो वो भी एक विजी एक्सेस है. मगर एक सर आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, you have used the word causality. इसका मतलब क्या होता है? What does causality mean? Causality or relationship. We find out. So when you apply those scales, the answer comes like not related, possible, likely. Those answers will come up. So they will tell you, for example, even if your patient is getting 4 drugs, right? When we apply that scale, WHO scale is subjective. It gives you answer like that. Naranjo scale is objective. It gives you a score, which again leads to that, whether it's a likely, possible, probable, not likely cause for the drug interaction. So this will tell you whether it's really related to drug or it's a by chance observation, which happened otherwise also. So that is causality assessment.
ओपीडी में हम कई बार देखते हैं, और ललित ग्रोवर जी और सनी ग्रोवर जी पूछ रहे हैं, वो कहते हैं कि मरीज आके कहता है जी टीका गर्मी करता है या गोली गर्म है, तो व्हाट डज दैट गर्म मीन? हाउ डू वी रैप आवर हैंड्स अराउंड दैट? इज इट एन एडवर्स ड्रग इवेंट और नॉट? शुड इट बी रिपोर्टेड और नॉट? एंड शुड वी रिपोर्ट इट एज गर्मी? हु डिसाइड्स कि गर्मी की परिभाषा क्या है? हाँ जी, जब वो गर्मी से रिपोर्ट करेगा तो मेडिकल पीपल नीड टू एक्सप्लोर दैट मैन मोर, कि आपको एसिडिटी टाइप ऐसे गर्मी लग रही है, या स्किन पे आपको रेडनेस हुई है, ओके, आपको लग रहा है वहां से बहुत वार्मनेस है, समथिंग लाइक दैट, दैट कैन हैपन। ओके, फॉर एग्जांपल सम ड्रग्स कैन लीड टू फीवर, that is also possible. So those things can happen, but we need to find out the exact terminology in the medical term to fit into that. And then, because you will be searching later on, causality assessment will ask which type of reaction is this, which you are trying to explore and finding out relationship with the drug. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इंसाइट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर एवरीबडी एक्चुअली, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हों, Yes. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हों, या वो पेशेंट्स हों, पब्लिक हों। जब आप डॉक्टर से बात करें, ट्राई टू एक्सप्लेन एज क्लियरली एज यू कैन। जब आप मरीज से बात करें, ट्राई टू लर्न। तो जो हिंदी के वर्ड्स हैं या उर्दू के घबराहट, गर्मी, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट दैट एक्चुअली मीन्स टू द पेशेंट, व्हाट इज द पेशेंट ट्राइंग टू कन्वे। हाँ, स्पेशली हम जैसे कहते हैं ना कि खट्टे डकार आते हैं, एंड वी यूजली नो एनाल्जेसिक्स के बाद एसिडिटी बढ़ जाती है, रेट्रोस्टर्नल बर्निंग पेन होती है, जिसको वो बोलते हैं खट्टे डकार रहे हैं अभी ना, ऊपर को प्रॉब्लम आ रही है और खाने पीने में, ऑल दोज थिंग्स वी नीड टू सॉर्ट अलाइन विद आर टर्मिनोलॉजीज, बिकॉज लेटर ऑन वी नीड टू एक्सप्लोर दैट। जो अभी आपने क्वेश्चन भी पूछा था कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो अगर हमें पहले पता लग जाए कि एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, एंड डेटाबेस जैसे आपको बोल रहा था मैं अभी, इस अवेलेबल, बाकी कंट्रीज का ओवरऑल डेटाबेस अवेलेबल है, हमारा डेटाबेस काफ़ी छोटा है अभी, टिल वी डोंट नो व्हाट इज द एक्सटेंट, तो स्ट्रेटजीज हमारी तभी बनेगी प्रिवेंशन की। बट राइट नाउ इशू इज, मेन इशू इज एडीआर मैनेजमेंट। उससे क्या आएगा, तो हम हेल्थ इकोनॉमिक बर्डन पे, इवन आप घर पे भी देखो, हमको दवाई लेते हैं, अगर घर में 4 मेंबर्स भी हैं तो महीने में कुछ लेते हैं, एक एडीआर तो होता ही है, पर हम उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, वो अगर हम डॉक्टर से बात करेंगे, या हम आप खुद ही एक डिसीजन ले लेते हैं, पिछली बार ये गोली खाई थी इससे ये हुआ था, हम उसको लेते नहीं, हम उसको बोलते हैं डी चैलेंज। फिर कई बार होता है हम वो दोबारा ले लेते हैं, भूल जाते हैं, फिर वही सेम रिएक्शन होता है। आई जस्ट एज एग्जाम्पल ऑफ ए किड गेटिंग ए रिएक्शन, स्किन रिएक्शन। तो वो मेरे पास आए थे, तो उन्होंने बोला कि इसमें ना कॉम्बिनेशन है, बच्चों में तो कॉम्बिनेशन कफ सिरप बहुत कॉमन है, तो उसमें फिनाइलफ्रिन भी था, कफ मिक्सचर में बहुत कुछ होता है। दे वर ट्राइंग कि इसको होता कैसे है, फिर बाई चांस देखे हुए हिस्ट्री के, जब हम पैरासीटामोल अकेली देते हैं तो नहीं होता है, when we are using this combination, so we slowly हम उसको रूल आउट करते रहे, then we came to one component। उसमें हमने जो हिस्ट्री ली वो थी डी चैलेंज और री चैलेंज की, किसको बंद करने से वो कम हुआ, किसको शुरू करने से वो फिर हुआ था। तो दीज 2 पॉइंट्स होते हैं, डी चैलेंज, री चैलेंज, वो काफ़ी कुछ हमें बता देते हैं, सो दैट आल्सो हेल्प्स अस, फिर हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसको। That point is well taken, and जैसे आपने कहा, India's database is very small, तो either India is not consuming any drugs or Indians don't get any adverse drug reactions। And जब आप We are घर very पे strong। अपने जाते हैं, हाँ, as a doctor, as a patient, if you focus only on your experience, the chances of error will be more। जब आप इकट्ठा सब लोगों का एक्सपीरियंस लेते हैं, इसी को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं, स्टडीज या रजिस्ट्रीज कहते हैं, तो देन चांसेस ऑफ एरर कम डाउन। Sir, Dr. Vipin Bandula has a question for you. Daksab is a pediatrician. He says, is it true that 365 drug combinations are banned in India? Yeah, around that. I think around 344 something. Exact number is there. Many were reviewed, okay? And finally, based on the evidence, as you said, evidence-based medicine, lot of documents were produced, reviewed by different committees, subcommittees, and now FDC list is available on CDSCO website. CD, CDSCO. You will get list CD. of all the new approvals banning on this website in India. Central Drug Standard Control Organization. Thank you, and greetings and blessings to you, sir, from Dr. N.S. Sharda. Sir is a senior physician from Ahmedabad. Sir, ये पूछ रहे हैं कि I have hiatus hernia. I have been taking rabeprazole 20 milligram once a day for the past 10 years. I don't have any problem. What does pharmacovigilance mean? For Dr. N.S. Sharda, sir. He has been taking rabeprazole for 10 years. Yes. So is now we have to, in this case, what we have to do is
It is not that every ADR which is reported will happen in every patient. That is also true. For example, the same way efficacy, when we talk about drugs, every drug is not effective to the same level in each patient. Okay, sometimes we call this individualized therapy these days. We customize according to the patient. It is not that, sir, if you are, for example, other components are very good, vitamin levels are good, calcium, your diet level is all that thing, you will not get it. Certain patients who does not have a good reserve of vitamin D already, for example, their initial young adult age, they were not taking milk products, so their bone density is less, and they are more prone to that. सो डॉक्टर शारदा सर तो हमारे 75 ईयर यंग सर हैं, तो ही इज one of those people who donated blood during the Indo-Pak War in 1971. So Right. that is when maybe Dr. Dinesh and I were barely around. So, तो सर डटे में सर आप लेते रहें दवाई if it's suiting you. And एक जनरल सा रूल भी होता है, don't start and don't stop for some of these drugs. And especially in our generation, sunlight exposure is less. So vitamin D issues in medicals, vitamin D you won't find. Okay, so the level should be around 50, the value in the units. We find they have 0.3, 0.4. That is the situation. And you can Very see true. somebody who has a so low, their bone density will be less. Anything, any predisposing factors, and you take a drug like that, that will be more chances of failure. रश्मि कर्नावत जी पॉइंट आउट करती हैं, एंड आई थिंक वी विल एग्री विद यू. आई एम सॉरी टू से मानते हैं मैडम, आप सही कह रही हैं, बट जनरली डॉक्टर्स डोंट टेक एडीआर रिपोर्टिंग सीरियसली. तो Yes. ऐसा क्यों है डॉक्टर दिनेश? एंड कैन यू स्पीक अबाउट लुधियाना, अबाउट नॉर्थ इंडिया, अबाउट इंडिया? व्हाट हैव यू बीन ट्राइंग, एंड Yeah. आपको फीडबैक क्या मिलता है? पुशबैक मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है क्या? आपको सम ऑफ द डिफिकल्ट टू हैंडल इमोशंस दैट यू हैव हैड इन द पास्ट फ्यू So इयर्स? I tell you, see, we have been doing these programs for decades now, right? So we have been talking throughout Pan India and other places too. There are many studies done in India why people do not report. First is lethargy. Second is lack of time, busy OPD, and then third thing, for example, I am sitting. You tell me to report, I will say, but my report will make a difference. Single report from my side. And fourth thing comes to your mind, okay, if I report with something bad will happen, okay, and they will quote me and all those things. These are the major factors which are coming. So these are reported facts in India also. I'm telling from Indian studies also. So they are बट there दी because, yeah, we don't have a sort of culture which has to come. For example, in some of the countries the reporting is high, as I told you, 50-80%. When you write a discharge report, they mention about ADRs also. We are worried about reporting ADRs. एक्चुअली एडीआर रिपोर्टिंग जो है वो एक तरह से सुरक्षा कवच है हमारे लिए. इट इज लाइक अ सिक्योरिटी, इट्स एन एडवांटेज फॉर अस. इट इज एक्चुअली सिक्योरिटी, इट्स अ हेल्प, इट्स आवर आर्मर. मगर हम उसको सुरक्षा कवच की तरह हम उसको दुश्मन मानना शुरू कर देते हैं. सो आई थिंक हमारी सोच बदलनी चाहिए. कथुरिया साहब हैं, ही सेज दैट आई गेट रिएक्शन विद ऑर्निडाजोल एंड एवरीबॉडी इन माय फैमिली गेट्स इट. तो फिक्स्ड ड्रग इरप्शंस होते होंगे इनको. तो अब ललित साहब पूछ रहे हैं, शुड आई रिपोर्ट और नॉट? विल इट Yes, मेक अ डिफरेंस? yes, yes, yes. See, क्या last फर्क time, पड़ेगा डॉक्टर साहब? I tell you, last time when there was a court case for banning the drug in India, the judge asked, give me evidence. There was not even a single report. सर मैं उसको आपकी एग्जांपल से रिलेट कर रहा हूँ. अगर आपकी तरह किसी ने ऐसी सोच के छोड़ दिया कि नहीं रिपोर्ट करना, अगर उस दिन किया होता बाई चांस उस ड्रग के लिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उस दिन वो हेल्प होती. हमारे पास डाटा ही नहीं है. सी कोर्ट में तो आजकल सीधा है ना, दे विल आस्क एविडेंस क्या है. नहीं है तो दे वर वेरी हार्श, दे रिवोक्ड द बैन. So that is the situation we have reached. Real, actually, this is a real situation. We used to talk कि कभी हो सकता है ऐसा, but this has happened now. Okay, so that is work for Lalit now to do today, and slides वो सब शेयर किए हैं. Dr. Dinesh, if you allow, can we put up the names of the sites for reporting, हाँ जी, हाँ जो जी सर. पेशेंट खुद रिपोर्ट कर सकें? So Pratik is with us backstage, and he'll be doing that for us. Dr. Vipin has a very insightful question. वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, why is it that in most drugs ADRs are not reported, but when it comes to immunization and maybe HIV therapy, then and tuberculosis, then we are quite strict, and then we do report these ADRs.
ये बायस क्यों है हमारे मन में? No, but what we are reporting is even for vaccines. Maybe, sir, you had a different experience. Nationwide, we find even for vaccines, reporting was very low. For vaccine mein, to there's another issue now because these are usually programs and people have a lot of high stakes in vaccination. Even a single report can generate a lot of issues. So people are worried about reporting there also. But anti-TB drugs, uh, we have many examples, sir. Four drugs, all the anti-TB are hepatotoxic. हम्म, They have an effect on the liver. अच्छा, we tell patient कि आपका ऑरेंज यूरिन हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिफेम्पिसिन. साथ में जो हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है सर, जॉन्डिस हो जाता है. सक्लीरा भी येलो होता है, नेल्स भी. वो पेशेंट कंफ्यूज कर सकता है, करता है. हम्म, टीबी ड्रग्स तो शुरू हो जाती है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती सर. सो पेशेंट जब आता है महीने बाद, लीवर सिरोटिक हो चुका होता है ऑलरेडी. और इन पेशेंट में सर आप देखो मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी कितनी हाई है. उसके बाद क्या होता है, द ओनली ट्रीटमेंट इज लिवर ट्रांसप्लांट, और वो ट्यूबरकुलोसिस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. We have seen sir high mortality in TB even today because monitoring of ADRs is not there. So अभी एक focus चल रहा है sir that we should associate pharmacovigilance with national program because they are already running. Just we need to report there. So that can also be done. That's a good idea. Reporting these ADRs as part of all the national programs, चाहे वो प्रिवेंटिव हों चाहे क्यूरेटिव हों. एंड दूसरा जो अब accreditations हो रही हैं डॉक्टर्स की भी और हॉस्पिटल्स की, जैसे NABH, तो NABH should also be telling the hospitals कि आप अपना वेबसाइट पे जाएं, अपना इंटेंट दें जैसे आपने कहा था, और एक्चुअली रिपोर्ट करके दिखाएं. Sir, और यदि actually, आप thank you so much for highlighting that. हाँ, If you go for NABH, first you have to show you are reporting. This is mandatory. और अगर आप दिखाते हैं कि 3 महीने से मैं मरीज देख रहा हूँ और मेरा सबसे बड़ा अस्पताल है पूरे पंजाब में और हमारे तो जी 10,000 का फुटफॉल है और एडीआर हमारा 0 है, तो देन द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड भी, अच्छा आप वाकई इतने अच्छे हैं और आपके मरीज इतने अच्छे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही. So this is one of the parameters. So their guidelines also, and they have to prepare also that how many they are submitting every month. एंड एक्चुअली व्हेन वी डू क्लिनिकल ट्रायल्स, हम फेज 2 या फेज 3 ट्रायल्स करते हैं, देन वी आर वेरी स्ट्रिक्ट. फिर एक-एक चीज डालते हैं. एनी काइंड ऑफ एडवर्स इवेंट इज मेंशन्ड, कॉजेलिटी बाद में देखी जाती है, बट देन वी आर स्ट्रिक्ट, मे बी बिकॉज़ वी टेक मोर रिस्पांसिबिलिटी अपॉन आवरसेल्व्स. एंड जब Because sir, as per हाँ, yeah, because sir, as per GCP, good clinical practice, when you experiment on humans, because of declaration of Helsinki, you have to report any ADR. If it is a serious, then the report goes everywhere within 24 hours. So that is the mandatory requirement. And after the last, if you remember, one of the COX-2 inhibitor, which was banned. Before that, there was a slogan in the industry: push our drug into the market. So they know even it is a banned in 1 or 2 years, they will have some commercial benefits. But after the last ban, there has been so many lawsuits. They are still paying. The slogan has changed, sir, now in the industry. They say, please kill our compound as soon as you find ADRs. And you will be एंड surprised right now, the maximum job opportunity in the pharmaceutical industry is in the pharmacovigilance cells they have opened up. So that is the importance which has changed now. that highlights and also responds to the question or comment from Vinny Joglekar ji and also Dr. Bhalchandra Meshram. Vinny says that usually pharmaceutical companies highlight the benefits of drug, but not the side effects and contraindications. So that may or may not have been true in the past, but now they are actually very, very sensitive. So it's mandatory, sir. Even for example, a new drug is launched, which is after phase 3 of human trials. Till 4 years, there's a mandatory post-marketing surveillance by the sponsors, which is done. Okay. Till 4 years, the drug is labeled as a new drug. So that we have to be careful. Many ADRs, for example, sir, I was coming to that only. अगर आप किसी भी inherent ADR को देखोगे ड्रग का, incidence usually varies 1 to 10,000. अगर सीरियस है तो 1 into 1 lakh. तो जब हम टेस्ट सर 5,000 में कर रहे हैं, चांसेस आर वो तो बाद में डिस्कवर होएगा. दैट इज द इनहेरेंट यू कैन से पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस ड्रग डेवलपमेंट. तो सारे एडियाज बाद में आएंगे ही आएंगे. सो दैट इज बाउंड टू हैपन एंड वी हैव टू बी विजिलेंट अबाउट दैट. एंड ये जो 4 years का डेफिनेशन है ऑफ न्यू ड्रग, दिस इज नाइस. इट्स ये इंडियन डेफिनेशन है या इट्स अ ग्लोबल डेफिनेशन? ग्लोबल आल्सो, इंडियन आल्सो. इंडियन आल्सो.
So most of the Rekha good ji, hospital do not allow the drug till it is in the market for 4 years into their pharmacy. Yes. एंड रेखा जी कहती हैं मुझे बहुत डकार की तरह गैस आती है, तो अब अगर एडीआर की बात कर रहे हैं तो दवाई से भी हो सकता है, मगर आप दवाई नहीं ले रहे, इट वुड बी अ गुड आइडिया टू शो अ स्पेशलिस्ट। Yes, yes. बट डॉक्टर एनएस शारदा सर अब पूछ रहे हैं प्रिवेंशन के लिए, सो विटामिन डी सर 1 to 2000 यूनिट्स अ डे शुड सफाइस। इफ यू टेक 60,000 यूनिट्स सैशे वंस अ मंथ, दैट शुड बी फाइन फॉर मेंटेनेंस। मगर Yeah. यदि किसी को ऑस्टियोमलेशिया है, रिकेट्स है, विटामिन डी डिफिशिएंसी है, तो देन उसको करेक्ट करने के लिए वी वुड हैव टू गिव 60,000 यूनिट्स वंस अ वीक फॉर मे बी 8 to 12 वीक्स। Sir, उसमें भी like we were looking at areas of vitamin D. So best is if you have never done your vitamin D levels, first you should do that, a baseline, and then accordingly you decide about your dose and take it. Because excessive vitamin D also has issues, ADRs. Most of us has अनीता, a habit of taking vitamin D in multiple portions. That also has its own ADRs. वन सिंपल वन वुड बी डॉक्टर साहब कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, एंगर। अनीता जयपुरिया जी कह रही हैं आई एम टेकिंग अ कॉम्बिनेशन व्हिच कंटेन्स montelukast and fexofenadine for urticaria and I've been taking it for 7 years. तो मैं ठीक हूँ, is it okay to continue that? Yes, yes. If you are responding to that, it's okay because in urticaria, as such, we keep on trying the drugs. Standard therapies, these are very individualized treatment there. अनजान साहिल जी आपको हेलो कर रहे हैं, बड़ी प्यारी डीपी है इनकी, हैंडसम अनजान जी हैं ये। एंड एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, दिस इज फ्रॉम डॉक्टर विपिन बंडोला। He says that metformin is to be taken after a meal. That is true for immediate release, doctor. Glimepiride is to be taken before a meal. Yes. So is the combination rational? Most of the companies give sustained release metformin. So therefore you can take it around 5 minutes before a meal. जो ये इशू है अबाउट टेकिंग ग्लिमेप्राइड 30 मिनट्स बिफोर अ मील, ये हमने भी स्टडी की। एंड सब हंसेंगे और डॉक्टर दिनेश सबसे ज्यादा हंसेंगे हम पे। जो पुरानी दवाइयां थी हमारी लाइक ग्लेवेनक्लामाइड, वी डोंट यूज देम ऑल दैट फ्रीक्वेंटली नाउ, दे वर टू बी टेकन 30 मिनट्स बिफोर अ मील। जो नई दवाइयां आई जैसे ग्लिमेप्राइड, ग्लाइक्लाजाइड, वो नई नहीं है, नाउ दे आर आल्सो 20 इयर्स ओल्ड इन द मार्केट, दे आर नॉट न्यू ड्रग्स एनीमोर, बट दे वर टू बी टेकन विद ब्रेकफास्ट, विद द फर्स्ट मील। मगर जो हमारे टीचर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने वो एक्स्ट्रापोलेट कर दिया जी, यदि ग्लाइवेनक्लामाइड 30 मिनट्स पहले दिया जाएगा तो ग्लिमेप्राइड भी 30 मिनट्स पहले देना चाहिए। तो जब हमने एक रिव्यू किया टेक्स्ट बुक्स का, लीडिंग एंडोक्रिनोलॉजी, डायबिटीज एंड फार्माकोलॉजी टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम अब्रॉड एंड इंडिया, वी फाउंड कि वो आपस में ही नहीं मान रही थी। मतलब कोई टेक्स्ट बुक कहती थी ग्लिमेप्राइड 30 मिनट्स, कोई कहती थी 0 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट। ऑथर्स को पूछा तो एक ऑथर मेरे बहुत अजीज दोस्त निकले, तो उनसे पूछा भी आपने 30 मिनट्स क्यों लिखा? वो कहता क्योंकि मेरे टीचर ने मेरे को बोला अभी 30 मिनट्स पहले लिखना है। दूसरी टेक्स्ट बुक के ऑथर को पूछा, वो कहता जी मेरे टीचर ने बोला। अब टीचर एक ही निकले बिकॉज टीचर थे ही 2 या 30 साल पहले। तो एक्चुअली इफ यू टेक इट 5 मिनट्स और 10 मिनट्स और इवन इमीडिएटली बिफोर द मील, things will be fine. This glimepiride metformin and the metformin is sustained release and there is no issue actually. यदि gastritis है, that is an ADR, तो report करें। And then usually what we tell our patients is you can take it during the meal, एक चपाती के बाद ले लें, अगली चपाती से पहले, या you can take it after the meal. एक insightful comment डॉक्टर साहब आपसे opinion मांग रहे हैं, अजय गोदा साहब। There is no pill for every illness, okay, but there is always an illness, always waiting to come to you if you take a pill. So will every pill create an illness? Not really, sir. Because see, we are moving into an era where we say even no, this is a, sir. You can say one next step we are going. That ADRs which happen serious. Sometimes we ban the drugs. They say when you ban a drug, remember that you are also dividing the advantages of this drug to many other subjects. Is possible that we need to study. Now they have done also genetic make of the patients where the serious ADR happened, and we know a lot of enzymes and other genes are involved, which also make you prone to the ADRs. Yeah, for example, take example of a liver enzyme metabolizing a drug. If you are deficient in that or there's a lack of enzyme, same drug will cause ADRs in you versus another person. But because we should not ban that drug in that case. So we are moving to a concept, sir, where this is the individualized component. It is not that you will suffer from all ADRs. I know, for example, I can't take somebody earlier took example of ornithazole. Any of the Me Too drugs in this series, secnidazole and all, I get severe headaches, sir, with the single dose.
So, but other people around me in my family, they are taking for 5 days also. Nothing happens. So this is ADR like efficacy. Yes, this will quite individualized, sir. एंड एज वी ग्रो वील कीप ऑन लर्निंग एंड मोर कि कौन सी दवाई अजय को सूट करती है, कौन सी संजय को करती है, और कौन सी दोनों को नहीं करती. सो And this you can say this is a culture of ADR management within the families, which happens. Everyone knows. Okay, इनको ये दवाई नहीं देनी. Somebody else will tell to the family. हमारे सब्जेक्ट में डायबिटीज में दो ऐसी दवाइयां हैं जहां पे अमेरिका में कहा गया है कि पहले आप जेनेटिक स्टडी करें, उसके बाद दवाई दें. एक है ऑक्स कार्बामेज़ेपिन, जो पहले हम काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते थे इन डायबिटिक न्यूरोपैथी. अभी भी यूज होती है एपिलेप्सी में, सीजर डिसऑर्डर में, मिर्गी में. तो वहां पे रूल है कि आप ऑक्स कार्बामेज़ेपिन लिखने से पहले आप एक जेनेटिक स्टडी करें. वो क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि एक पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप के साथ यदि आप ये दवाई देते हैं, सो देन द रिस्क ऑफ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम गोज अप. दूसरी दवाई जो मेरे सब्जेक्ट की है वो है क्लोपिडोग्रेल. वो हार्ट डिजीज में इस्तेमाल होती है. तो कार्बामेज़ेपिन में दे वांट द जेनेटिक स्टडी टू प्रिवेंट साइड इफेक्ट. क्लोपिडोग्रेल में उन्होंने देखा कि देयर इज अ पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप जहां पे क्लोपिडोग्रेल असर ही नहीं करता. वो खून पतला करने वाली दवाई है, आप जितना मर्जी दे दो, 150 क्या आप 1500 मिलीग्राम डाल दो, वो दवाई असर ही नहीं करेगी. तो अगर आपको पहले ही पता है कि वो दवाई नहीं असर करेगी, तो फिर आप क्यों दो? देन यू गिव बेटर ड्रग्स. तो इसलिए भी एक जेनेटिक स्टडी होनी चाहिए व्हेन द पेशेंट इज इन द आईसीयू. तो डॉक्टर साहब, दिस इज फ्रॉम माय सब्जेक्ट, बट आर देयर अदर एग्जांपल्स लाइक दिस, एंड हाउ फीजिबल इज इट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया? Sir, this is quite feasible. Right now, you can say, if I talk maybe another 5, 10 years, we will have something reach. I'm talking about future generation. What will happen? There will be a test, sir, which you will be doing like other routine test, which will tell you which drug you should take or not. We already know for many drugs are ADRs we can predict before even the drug is when marketed. Pharmacogenetics we call this, and for some of the drugs we already know if this certain isoenzyme is less or deficient in certain population, that is there already we know. Okay, so even some dose of the anti-TB drugs in different countries, national program is different because of their population genetics. So those things are quite easier now, but slightly expensive. But with the mass production and use, cost will slowly and slowly come down, and we will reach a maybe at some time in years to come where we can predict that also. वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, एंड जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं. दैट इज द वे फॉरवर्ड. अभी भी हम फिनोटिपिक कैरेक्टराइजेशन करते हैं. फिनोटिपिक कैरेक्टराइजेशन मींस डॉक्टर विपिन लुक्स एट द पेशेंट. वही जो आयुर्वेद में था, दर्शन चिकित्सा. Maybe he touches the patient, स्पर्श चिकित्सा, he palpates the patient, and then he decides इस पेशेंट को मुझे 10 ml per kg IV fluid देना है या 20 ml per kg IV fluid देना है. That is phenotypic. और जीनोटिपिक है कि you do that genotypic study and then you realize. डायबिटीज में हम इन बिटवीन चलते हैं. So we do a phenotypic characterization. यदि मरीज हमारा obese है, then we think of different drugs. पतला है तो we think of different medicines. And then we also do biochemistry. So that tells us. आयुर्वेद गोज वन स्टेप अहेड एक्चुअली सर. तो जिस तरह से हम मेटाबॉलिक ट्रायाज करते हैं बेस्ड अपॉन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सो आयुर्वेद विल डू वात, पित्त एंड कफ. सेम थिंग, कैटाबॉलिक, यूबॉलिक, एनाबॉलिक. बट दे विल आल्सो डू अ साइकोटाइप. सो दैट इज सात्विक, राजसिक, तामसिक. ऑटोनॉमिक बैलेंस. Rajasic is hypersympathetic and Tamasic is hyperparasympathetic. So this is a thing. This is something that has gone on for so many centuries in medicine, but we are evolving. We are becoming better and better. सर एक क्वेश्चन अनजान जी का है. मेरी एज है 24, वो डीपी से दिख रहा है छोटे भैया, और मेरा बीपी लेवल इज सो हाई लास्ट 5 इयर्स. ओ बाप रे, छोड़ के भाग गए थे क्या? मैंने हर टेस्ट कर लिया मगर सब टेस्ट ठीक हैं. ओके, मेरा राइट हैंड को कुछ होने लगा है. नाउ दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एट एज 24. बट अगर बीपी हाई है काके, वी नीड टू डू सम टेस्ट, एंड मे बी बिकॉज अगर यंग एज पे बीपी हाई है, चांसेस ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन आर हाई. तो आपके डॉक्टर जो हैं वो किडनी के लिए और एड्रिनल ग्लैंड, इन दो चीजों के लिए टेस्ट करेंगे, एंड यू मस्ट गो टू अ गुड हॉस्पिटल. यदि डॉक्टर नहीं करते, उनको बोलो आप मेरे किडनी के, और एक रीनल डॉपलर होता है, किडनी के और एड्रिनल ग्लैंड के टेस्ट करो. स्वप्ना जैन जी हैज अ सीक्रेट, एंड आई आल्सो शेयर द सेम सीक्रेट, बट हम किसी को बताएंगे नहीं स्वप्ना. वो है कि इट्स अ ग्रेट टॉपिक. थैंक यू डॉक्टर दिनेश सर.
And दूसरा, it's great listening to the topic. That also we thank Dr. Dinesh, and we weren't aware about this earlier. अब किसी को बताना थोड़ा ना होता है सब ना online. But great. Sir, one last question we'll take from Dr. Bandula. Alcohol and gender. तो एंजाइम में फर्क है क्या? Why is it that there is a different threshold for men and different for women? And have you seen this impacting clinical practice? This is a very well-known phenomena, sir. We call this as development of tolerance. Enzymes gets induced, and not only alcohol, sir. With alcohol and some drugs, same enzymes get induced. So what happens? So metabolizing capacity improves. You give more drug, they will metabolize it faster. The active drug will not be there. Same active alcohol. You have to take more quantity for the same effect. This happens with many drugs, sir. And alcohol is one of the example we start with. We take alcohol as a chemical also, sir, taken exogenously. So it comes also under definition of those components. So this is very well known phenomena. And similarly, gender, sir. Yes, definitely. It is known some enzymes difference is there in the gender, but it has been seen that that doesn't affect the clinical doses which we are using. So clinically, that is not so significant. So clinically, no significance, but it's good to know about it. And thanks, Dr. Vipin. Thanks to everybody actually for raising all important points. सबसे ज़्यादा तो thank you करेंगे Dr. दिनेश को फिर से for telling us how important it is for us to know about ADR and how important it is for us to report as well. यदि आप report कर रहे हैं, it's an adverse drug event. You and other people will decide whether it's an ADR, a reaction or not, but event तो report करें ना कम से कम. Yes. It's said you suspect, you report. See, rest of the work is by these centers, which we call as AMC center. For example, Dr. Sanjay, any one of them reports, and it will go to the nearest center which is there to them. They will get on email all the details. When you report on the ADR app, same form, we get the same form generated automatically. Okay, then they call us, we get all the details, and we have a people employed under the national program. Okay, we validate the report. We ask them some questions, validate the report, nothing else. Confidentiality is not broken. Even in the report, patient's name is not there, only initials are used. So all that is maintained, validation is done for that also. And then it is entered. Then there are certain issues, we look at the form, essential requirements to enter into the database. So see, idea is what? Suppose today, whatever, how many numbers are we are here? Approximately, any idea right now? By the time the week is over, you will have more than 10,000, 15,000 views, sir. Okay. So even if we report one ADR in a month, we can cross many milestones for India. We can. Each one of us, just one ADR per month to start with. And this will help to prevent ADR morbidity and mortality in our future generations, which is actually needed. So I think that's a great thought on which to sign off. हमारा राइट तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी. अब ये नहीं कि यू गो आउट लाइक अ केज इन सर्च ऑफ अ बर्ड. एक कैफका की स्टोरी है, ये यूरोपियन लिटरेचर से है, जहाँ पे वो है भी जज साहब जो हैं वो अब ढूंढना चाह रहे हैं कि किसी को मैं दोषी पाऊं, तो किसी को तो मैंने जेल में डालना है. तो ऐसा भी ना करें कि जबरदस्ती एडीआर बनाएं, बट यदि आप कोई एडीआर एनकाउंटर करते हैं तो डू रिपोर्ट and become an ambassador of good health, of proactive health. And I think that's the way forward for our country. जेनेटिक फार्मेसी भावना जी पॉइंट आउट कर रही हैं, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कि पहले हम जेनेटिक स्टडी करें, उसके बाद डिसाइड करें कि कौन से मरीज को कौन सी दवाई देनी है, बोथ फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ डिजीज. इट्स बीन ग्रेट डॉक्टर साहब बीइंग विद यू. सबको ये तो मैं बताना ही भूल गया कि जिस कॉलेज में डॉक्टर साहब पढ़ाते हैं, वो प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उस कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूँ. मैं पास भी हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, बड़े साल. So I think pharmacology is the only subject in which I got a distinction also. So great. Professor Natu होते थे हमारे. Yes. Yeah. And Professor Dinesh teaches not only doctors and students in Ludhiana, he also teaches doctors across Punjab, and not only that, he is the nodal authority to teach everyone medical education across North India. तो medical education आप
कैसे पढ़ाते हैं, वो डॉक्टर साहब पढ़ाते हैं हमें। एंड जैसे डॉक्टर अल्पना अरोड़ा भी हैं, इट्स एन आई ओपनर। एंड आप डॉक्टर साहब का जो तरीका है बात करने का, आई थिंक उससे वी हैव रियलाइज्ड कि इन पे इतनी ज़िम्मेवारी क्यों है। व्हाई द गवर्नमेंट हैज़ entrusted him with so much of responsibility, that we have understood। एंड ये भी कहेंगे जिसने भी आपको इंटरेस्ट किया उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बिल्कुल सही किया। With this, I'd like to thank everybody. Prateek is with us backstage. Could we show a certificate of appreciation for Dr. Sir, please? All right. Thank you, sir. Thank you so much, and thank From you the everyone for joining. from the entire KK Med Talk family, आपको शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। Sure, जाते sir. जाते हरियाणवी पढ़ा देते हैं आपको थोड़ी सी। सो शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी इज उर्दू, हिंदी एंड पंजाबी, बट हरियाणवी डजंट हैव एन इक्विवेलेंट फॉर थैंक यू। एक्चुअली वी डोंट हैव। तो हमारा क्लोजेस्ट आता है थारा भला हो। सो फ्रॉम एवरीवन ऑन केके मेड टॉक, थारा भला हो हम सबका भी। एंड वी आर विद यू एवरी डे इन केके मेड टॉक 7 से 8 बजे। मैं होता हूँ सोमवार और वीरवार। अब वीरवार आपको मिलूंगा डॉक्टर नेहा खंडूजा के साथ, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो ये हमारा टॉपिक होगा थर्सडे का। और आपको मिलते रहेंगे। खुदा हाफिज। जय हिंद। Jai Hind.